All right. Hi, everyone. Good morning. Yeah, hi. Good morning, Pratnesh. Good morning, Pratyasha. Hi, Shivank. Good morning, Siddhi. Good morning, Rugved. Good, Tanmay. Yeah, hi, Rudra. We are going to continue with thermodynamics, guys. What we studied in the last class, वहीं से continue करेंगे. And in addition to that, we can discuss chemical bonding and उसके साथ doubts जो हैं आप लोगों के. ठीक है. So last class में as a quick recap, right, we had just started thermodynamics and thermochemistry, and हम ये कुछ terms discuss कर रहे थे, right, and as part of that introduction we were able to understand some of these terms regarding the processes. Then towards the end यहाँ पर हम लोग last class में break ले लिए थे. So we will continue from here only, understanding these important terms of reversible and irreversible processes. Now, bonding का doubts में, like I will spend some time around कितना है आज 11 से 1:30 है ना. So let's do this thing that आखिरी का half an hour we will be spending on bonding का doubts. ठीक है. So 1 से 1:30 we'll put a hard stop. जितना भी होगा हम लोग रुक जाएंगे at 1 o'clock, and then we will discuss bonding के doubts. In the meantime, we will continue with thermo. All right. I think अभी तक काफी जनता आ नहीं पाई है. इसके पहले आपका कितनी बजे तक क्लास था? 10 तक था. ओके. हाँ तो ठीक है. I think most of the students have got enough break time also. आ जाएंगे. So let's begin with this discussion of nature of processes being classified into these two kinds, reversible and irreversible. So in the last class जब हम processes के बारे में बात कर रहे थे, मैंने आपको type of processes बताया था, and as I told you that there are infinite types of processes that can be there. Like a process is something that we define as the path or method taken to go from one initial state of thermodynamic equilibrium to another state of thermodynamic equilibrium. And उसके infinite types हो सकते हैं, right? You have to, let's say, go from this initial state to this final state, right? Now you could go in multiple ways, right? You could go in this manner, directly, indirectly, in a curved manner, or whatever path that you would want to take. Now, out of those possibilities, हम लोगों ने कुछ key types of processes, some important ones discuss किए थे, like isobaric, isochoric, isothermal and adiabatic. This will be something that we'll be using quite often, right? And then we also spoke about cyclic, in which the initial and the final state was same. Now I'm going to talk about nature of process. So this is something which will be classified into two kinds, reversible versus irreversible. Now, what makes a process reversible versus what makes a process irreversible, इस चीज को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, and then we will highlight the important characteristics of reversible and irreversible processes and put them to use in any general scenario as well.
The example that we would want to start with देखना यहाँ पर is isothermal expansion of an ideal gas. That is the example that we are starting with. ठीक है, this is just an example. So setup कैसा है यहाँ पर आप notice करना. You have a vessel जिसके अंदर you have gas trapped inside. There is a massless frictionless piston. ठीक है, ideal kind of a piston. And there is a pile of sand over it. And the walls are perfectly conducting. Why are walls perfectly conducting? Because we want the process to be isothermal. So we want internal temperature equal to the external temperature. And heat can get transferred easily. अंदर से बाहर जाना है, बाहर से अंदर जाना है, heat चला जाएगा such that temperature inside is equal to temperature outside is equal to constant. That is how the design of this process is. अब notice करना expansion करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? What is it that I should do for the gas to undergo expansion? I should remove the sand. I could heat also. That's correct, Ravi. That's one way. I can increase the temperature. But let's say I don't have the equipment for increasing the temperature right now. What else can I do? I can reduce the pressure, right? I can remove the sand. Now, the process of removing of sand can create these two types of processes, the one which is reversible and the other which is irreversible. अब नोटिस करना रिवर्सिबल तरीका क्या होगा, ठीक है, एंड उसको हम रिवर्सिबल क्यों बोलेंगे वो भी मैं आपको थोड़े टाइम बाद समझाऊंगा, बिकॉज यू डेफिनेटली विल हैव अ डाउट दैट व्हाई द वर्ड्स रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. सो वो मैं आपको वर्ड बाद में समझाऊंगा, पहले मैं तरीका समझा देता हूं. नाउ वन वे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फॉर द एक्सपेंशन टू हैपन इज दैट आई रिमूव the sand grain by grain, very small change at a time. That is what I'm going to do on the left hand side. See, initial pressure which the gas has is equal to atmospheric pressure plus जो भी sand की वजह से pressure होगा, right? That will be our initial equilibrium. In the initial equilibrium, T initial is atmospheric pressure plus mg by A. And temperature is constant. Finally हमको क्या चाहिए? Finally we want all of this sand to be removed such that final pressure is PATM, right? So the volume will also change from V initial to some V final. The piston will move up. As I said, this can be achieved in two ways. यहाँ पर notice करना, on the left hand side, how am I achieving this? In a reversible manner. This can be achieved reversibly, right? This can be achieved reversibly if we remove sand in a grain by grain manner. That is infinite small changes at a time. Really small changes at a time. And that is why I chose the example of sand, so that you can visualize that removing one grain at a time will be equivalent of infinite small change at a time. एक एक grain करके मैं remove कर रहा हूँ. This will be called as a reversible way. There is another way in which we can achieve this. Notice करना, we can achieve this irreversibly if we remove sand
completely, like in one go. Remove the entire sand in one go. So this will be called as finite or large changes at a time. This will be called as irreversible way. Now, इन दोनों तरीकों में एनर्जी एक्सचेंजेस में डिफरेंस आ जाता है. कैसे आ जाता है, क्यों आ जाता है, वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा. But it is important for you to know upfront that both these processes result in different energy exchanges happening between system and surrounding. And that is why this classification we have of reversible versus irreversible. Now, इस example को अब अगर मैं generalize करूंगा तो notice करना, the generalized difference between reversible and irreversible process can be noted down in the following way, that reversible processes are carried out in such a manner that the driving force and the opposing force are almost equal. There is a very small difference between the driving force and the opposing force in case of reversible processes. जैसे यहाँ पर आप notice करना, if we observe the piston, तो पिस्टन को ऊपर जाना है तो उसके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस. ठीक है, और ऑपोजिंग फोर्स क्या है, जो सामने से आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द सैंड. एंड इसमें से जब हम लाइक इनिशियली बोथ आर इक्वल, इट इज इन इक्विलिब्रियम, एंड मैं एक ग्रेन ऑफ सैंड रिमूव कर रहा हूं, तो आई एम मेकिंग द एक्सटर्नल प्रेशर एज P minus dP, like infinitely small difference between the driving and the opposing force, and उससे ये piston like बहुत ही infinite सा ऊपर shift हुआ. And this I keep on doing कब तक, till I remove entire sand in grain by grain manner, and that will be called as the reversible process. Whereas यहाँ पर on the right hand side हमने irreversible expansion किया, and irreversible expansion में या irreversible process में what was the approach, that there is a finite difference between the driving and the opposing force. So piston के ऊपर driving force pressure of gas लग रहा था, and opposing force was PATM plus mg by A, like, and both were equal initially, but हमने suddenly ये mg by A गायब कर दिया, like we removed the entire sand at once. So there became a significant difference between the driving force and the opposing force, and this expansion or this process will be called as irreversible process. ठीक है, now notice करना an important characteristic difference between reversible and irreversible processes. During a reversible process, the system and surrounding are always in state of equilibrium. Throughout the process, ठीक है, during word important है यहाँ पर, that during the reversible process, system and surrounding are in state of equilibrium. Whereas irreversible में notice करना, ठीक है, the equilibrium is only at initial and final state, not throughout the process. During irreversible process, ठीक है, जो ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया, कंप्लीट रिमूवल ऑफ सैंड इन वन गो का, सो ड्यूरिंग दिस इरिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज कंप्लीट रिमूवल ऑफ सैंड. तो इसमें सिस्टम इनिशियल स्टेज पर इक्विलिब्रियम था बिफोर सैंड वाज रिमूव्ड, एंड फाइनली, ठीक है, व्हेन वी विल फाइंड द पिस्टन टू रीच टू इट्स टॉप मोस्ट पॉइंट, तब भी इक्विलिब्रियम आएगा. ठीक है,
but not during the process. ठीक है, not throughout the process. There is no equilibrium throughout the process. यहाँ पर in case of reversible process, on the left hand side, the system and surrounding were always in the state of equilibrium. ठीक है, इसको आप विजुअलाइज भी यहाँ पर लिखना किस तरीके से करोगे. यहाँ पर मैंने एक ग्रेन ऑफ सैंड रिमूव किया. ठीक है, पिस्टन हल्का सा ऊपर मूव किया, इक्विलिब्रियम वापस से आ गया. फिर एक ग्रेन ऑफ सैंड रिमूव करा, पिस्टन ऊपर आ गया, राइट, एंड इक्विलिब्रियम हो गया, राइट. सो इनिशियल से फाइनल जितना भी हम जा रहे हैं, throughout the process system and surrounding are in equilibrium. Whereas यहाँ पर आपने पाइल ऑफ सैंड रिमूव किया, इनिशियली इक्विलिब्रियम था, देन आपने पाइल ऑफ सैंड रिमूव करा, उसके बाद पिस्टन ऊपर जा रहा है, एंड देन फाइनली कहीं पर जाके सेटल हो जाएगा, एंड दैट विल बी द फाइनल स्टेज. वहां पर इक्विलिब्रियम रहेगा. बट थ्रू आउट द प्रोसेस, नीचे से ऊपर जाने का जो प्रोसेस था, उसमें देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. ठीक है. नाउ अब नोटिस करना, because of this way in which the process was conducted, okay, there is an important point that we need to also understand. ये इसी से आता है that in case of reversible processes, notice करना, as a result we are able to define properties of the system throughout the process. As a result of a reversible process, we are able to define properties of system throughout the process, and we are able to draw a proper graph to depict how the change happened. So let's say आपको यहाँ initial से यहाँ final जाना है, ठीक है, and throughout the process system surrounding equilibrium में है, right? So you are able to define the temperature even during the process because system and surrounding are in the state of equilibrium, and you are able to trace the path, this hyperbolic path, that okay, this is how the pressure and volume are changing during the process, right? The temperature will be constant throughout the process, and you are able to define this entire path. However, irreversible में notice करना, ठीक है, irreversible में क्या हो रहा है, the system and surrounding are in equilibrium, the system and surrounding are in equilibrium at initial and final state only, and not during the process. So what this results in, यहाँ पर notice करना, initial state मुझे पता है क्या है, final state मुझे पता है क्या है. Initial state का pressure volume temperature पता है, final state का भी pressure volume temperature मुझे पता है. But during the process, I am not able to get an answer to what properties the system would possess. Like यहाँ initial से final ये इस तरीके से आ रहा है कि इस तरीके से आ रहा है कि इस तरीके से आ रहा है, I don't know, because during that process, right, I am not able to get an answer to the properties of the system because there is no equilibrium between system and surroundings. हो सकता है initial से final like इस तरीके से आ रहा हो, या फिर इस तरीके से, या फिर इस तरीके से, like कुछ भी हो सकता है because I am not able to get a measurement given the fact that
system and surrounding are not in equilibrium. ठीक है. Now notice करना that sometimes, which is technically not correct, ठीक है, technically speaking it is not correct, but sometimes reversible processes are called slow and irreversible processes are called fast. In some books, in some statements, you might come across the word slow and fast for reversible and irreversible, but that is technically not correct because thermodynamics का टाइम से कुछ लेना देना नहीं होता है. So let me advise that you upfront that the definition of reversible process is not slow process. The definition of irreversible process is not fast process. The definition of reversible is infinite small changes at a time. Going from initial to final, infinite small changes at a time such that systems surrounding are in equilibrium with each other. That is the definition of reversible process. Irreversible process का definition, finite changes at a time going from initial to final situation. During the process, the system and surrounding are not in equilibrium with each other. Okay, so this is important point for you to remember. Now, अब notice करना, this brings me to a reality which also needs to be taken into account. No real process is reversible because by the definition of it, if I am saying that infinite small changes at a time, so yes, a reversible process should take infinite time to complete. And that is why we say that no real process is reversible. The concept of reversible process is hypothetical. We can design a process to be as close to reversible as possible. However, this concept of reversible process is purely theoretical and serves an important purpose of mathematically understanding thermodynamics. Whereas irreversible processes are the ones which are practical, are the real processes. They complete in a finite amount of time. We can come close to reversible processes. For example, the one which I used as an example, in which I am taking a pile of sand and I am removing grain by grain, so that the change is actually really quite small as compared to the overall quantity. And this is as good an approximation of a reversible process as we can get in practical life. Okay. So this difference between the two types, or I should say the two natures of processes, reversible and irreversible, should be very clear to you. How it comes of use, ये आपको धीरे धीरे, when we are going to apply thermodynamics on processes around us, you are going to understand. ठीक है, एक एक करके अब आप लोगों के डाउट्स लूंगा मैं. So you have doubts, I'm sure you guys have sent a lot of questions to me. हम एक एक करके अब डिस्कस करते हैं. So can you guys raise your hands so that we can have a
faster interactive discussion. हाँ बोलो हर्ष. हेलो सर. हाँ बोलो. सर ये इरिवर्सिबल में मतलब अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो फिर कौन से प्रोसेस होते हैं चेंज के बाद, मतलब क्या हो रहा होता है? So this example that we spoke about, इसमें कैसा है, इनिशियल इक्विलिब्रियम है एंड यस सर. जब मैं सैंड रिमूव कर दूंगा तो फाइनली भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा. ठीक है. However, ड्यूरिंग द प्रोसेस जब ये पिस्टन मूव कर रहा होगा उस टाइम पर देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो उस टाइम पर सिस्टम की प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहे होंगे मुझे उनके बारे में आइडिया ही नहीं है. दैट इज द रीजन व्हेन आई वाज टू रिप्रेजेंट दिस प्रोसेस ऑन अ ग्राफ, say P versus V graph, I could only plot the initial and the final point. कि भाई यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर है एंड मुझे यहाँ पर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे पता है कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर कितना है. बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ग्राफ ऐसे जा रहा है कि ऐसे जा रहा है, आई हैव नो क्लू यस because सर. the temperature changes. I am not able to get a measure of it because the state of system is not known to me. इक्विलिब्रियम होगा तभी तो मैं मेजरमेंट कर पाऊंगा. Yes sir. So we can only study things which are in equilibrium. हाँ. And so also, why are they called reversible and irreversible then? Because it's not coming back to its initial position, right? Right. I will come to that question. That why is it being called reversible and irreversible? Like why not give it some other name? Like why don't we give it a name like say small changes are a time process and large changes are a time process, Yes sir. or just call it type A and type B? Like why did we choose to use this word reversible and irreversible? Yes sir. ठीक है. Yes. So वो मैं डिस्कस करता हूँ. Any other doubt, any other question that you might have Okay sir, regarding this thank you. description of reversible and irreversible processes? हाँ, जैसे तन्मय का डाउट है, सैंड को रिमूव क्यों कर रहे हैं हम? टू यूज बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज, नहीं समझ में नहीं आया तुमने क्या लिखा. हम सैंड को इसलिए रिमूव कर रहे हैं बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज टू डू एक्सपेंशन. तो हम प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना. दैट इज व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव वाज. And this is just an example. You could have taken another example of sorts, and I will be taking many other examples also. But this was one first one which I wanted you to understand to differentiate between reversible and irreversible processes. हाँ, correct Harsh. So because in the left hand side there are infinitely small changes happening at a time, we are saying that the system and surrounding are in equilibrium throughout the process. Correct. Any other doubts regarding reversible and irreversible processes? Okay. Now coming to that question, that why is it that we are talking about these processes or giving them the name reversible and irreversible? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोसेस रिवर्स नहीं करा जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, इफ यहां पर लेट्स से मैंने पूरा का पूरा सैंड रिमूव कर दिया था इन अ ग्रेन बाय ग्रेन मैनर,
एंड मैं वापस से इस पे ग्रेन बाय ग्रेन मैनर में सैंड पुट करूं, लाइक आई ब्रिंग बैक द सैंड ऑन दिस पिस्टन, तो ये जहां ऊपर था वहां से नीचे आ जाएगा एंड वी विल बी एबल टू कम बैक टू द ओरिजिनल लोकेशन. Same thing will happen over here. Like if I put the gas, or sorry, put the sand above this piston again, then I will be able to return back to this original location, right? तो दोनों में ही I am able to come back to the original position of piston. Then why one is being called reversible and the other is being called irreversible? मैं वापस से सैंड डाल दूं तो हो रहा है ना चेंज, लोकेशन वापस ओरिजिनल लोकेशन पे आ रहा है. Now this is definitely a good way of questioning that why one is being called reversible and the other is being called irreversible. However, the actual reason behind putting these words reversible and irreversible is related to another thermodynamic property called as entropy. ये हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा. एंड व्हाट यू विल फाइंड व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड एंट्रोपी, होता क्या है वो मैं बताऊंगा आपको. यू विल फाइंड दैट if I do the process in reversible manner, ठीक है, that is infinitely small changes at a time. If I do the process in a reversible manner, then I can bring back the system as well as surrounding to the original state and say that change in entropy of universe, ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी का चेंज इज जीरो. दैट इज the system and surrounding both have reverted back to the original situation. But in case of irreversible, processes, I will not be able to bring entropy back, ठीक है, I will not be able to bring entropy of universe, ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलाकर I will not be able to bring back entropy to the original value. I might be able to bring back many other thermodynamic properties. जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि जो ये पिस्टन की पोजीशन है, right, that means say the volume, I am able to bring it back. I removed the sand, I added the sand, I was able to bring back the piston to the original location. Same here, I removed the sand, I added the sand, I brought the volume to the original value, I brought the pressure to the original value. So I may be able to bring back many thermodynamic properties to their original values. But there is this one important thermodynamic property which I will be only able to reverse if I do the process in a small infinite change at a time wala manner. But if I do finite changes at a time, then I'll never be able to bring the universe back to the same entropy. And that is what introduce these words reversible and irreversible. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती क्या है एंट्रोपी, ठीक है, डेफिनेटली यू गाइस आर राइट नाउ स्ट्रगलिंग विद इट कि ये मतलब क्या बता दिया.
तो हम बात करेंगे इसके बारे में. However, to give you an important context of what is the key difference between naming them reversible and irreversible is from the perspective of entropy. That if we do infinitely small changes at a time, then entropy of universe can be reversed along with all the other thermodynamic properties. But if we do finite changes at a time, we might be able to reverse some thermodynamic properties, but never the property called as entropy of the universe. And that's why it is given the name irreversible. Okay, so this is the background behind giving the names reversible and irreversible. As of now, the important definition for you, the important understanding for you is, in case of reversible processes, we do small changes at a time. In case of irreversible processes, we do finite or large changes at a time. Okay. In case of reversible processes, there's a small difference between the driving and the opposing force, and the system and surrounding are always in the state of equilibrium. Whereas in irreversible processes, system and surrounding are in equilibrium only at initial and final state and not throughout the process. And that is where we can define the variables, we can define the properties of system during the process in case of reversible process, but in case of irreversible, we can not define the state properties during the process. We can only like plot the initial and the final state of equilibrium. Okay? And of course, the fact that reversible is hypothetical, whereas all real processes are irreversible in nature. ठीक है. हाँ, मैंने आपको वही टाइम के बारे में बताया that yes, you can say, ध्यान से ऑब्जर्व करना, you can say as a indirect understanding of reversible and irreversible that reversible process will be slow and irreversible process can be fast. ठीक है, you can put that word. However, that is not the correct technical definition of reversible and irreversible process. That is what I'm trying to help you understand. So कभी किसी क्वेश्चन में, ठीक है, कभी किसी क्वेश्चन में मान लो ऐसा वर्ड आ जाएगा that something changed happened in a sudden manner. So yes, you can take a hint from that question that okay, question is using the word sudden, so we should use the understanding that the process is irreversible in nature. ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, but I would not put it in the definition of irreversible processes. कभी किसी क्वेश्चन में मान दो ऐसे लिख के आ गया that a gas is being heated in a very slow manner, so you can take a hint from that question that okay, maybe the question is talking about that the process is being done reversibly, but I will never define reversible process to be a slow process. ठीक है, technical definitions are the ones which I have highlighted in the beginning itself, that this is what defines reversible and irreversible processes. All right, I hope you got this difference, and now how it plays a role in the numerical calculations of energy exchanges, वो हम जैसे जैसे प्रोसेसेस देखते जाएंगे करते जाएंगे उनके साथ ऑब्जर्व करेंगे. Like we are going to get into the first law of thermodynamics and second law of thermodynamics and find conventions and do the calculations, and then you will understand the numerical difference that we are getting between reversible and irreversible processes. All right, so having said this, now let me move on to the next concept.
अभी भी हम लोग टर्म्स ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं गाइस, सो आई एम नॉट स्टिल नॉट डन विद द इंट्रोडक्टरी टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर. So there are these new terms, heat, work, internal energy, which I would now like to introduce to you. So जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था that this chapter is the study of energy exchange happening between system and surrounding. So this energy exchange that happens between system and surrounding can be classified into two types. You have heat and you have work. These are the two modes in which we classify energy exchange. Now, heat is the energy exchange that happens because of temperature difference between system and surrounding. This is the definition, that heat is the energy exchange happening due to temperature difference between system and surrounding. All the other forms of energy exchange that happen between system and surrounding, we will call them as work. So work will be a more broad definition. It will have various interpretations. For example, you have mechanical work, like also called as PV work, something related to, say, engines, right? So for example, inside a automobile combustion engine, क्या हो रहा है? एक chemical reaction हो रहा है, that is your process, and उस chemical reaction से expansion हो रहा है, pistons of this engine move up and down. So that will be an example of mechanical work. That will be actually the focus of this chapter. You also come across non-mechanical work, or we call it as non-PV work. For example, the batteries present in your phones or laptops and whatnot. तो उसमें भी क्या हो रहा है? Inside the cell, inside the battery, there is a chemical reaction that is happening. That is also a thermodynamic process. And उससे हमें इलेक्ट्रिकल वर्क मिल रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है जिसके अक्रॉस करंट जा रहा है. So that will be an example of an electrical work. So this is also something that we are going to study, but not as part of this chapter. This is studied in another chapter called as electrochemistry, जहाँ पर we'll be studying about these Daniel cell or like voltaic cell and electrolytic cell, and we will be talking about how chemical reactions are used and processes are designed in a manner that we can extract electrical work out of them, right? Engine would be an example of extracting mechanical work out of a chemical reaction. ठीक है? So two forms of energy exchanges, heat and work. Heat is the one which is because of the energy difference, sorry, temperature difference between system and surrounding. That energy exchange is called as heat, right? Whereas work is a more general interpretation of energy exchange. And in this chapter, our focus will be primarily on mechanical work, the expansion, compression, that kind of work. ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? क्या कह रहे हो यश? फोटोकेमिकल चेंजेस. हाँ, so it will be again understand, जब हम जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, right? So for example, you took photochemical as an example. You can take, say, refrigerator as an example, in which electrical work
right? Electrical work is used to exchange heat from a colder region to a hotter region. Naturally कैसा रहता है, नेचुरल फ्लो ऑफ हीट कैसा रहेगा, एक हॉट रीजन है एक कोल्ड रीजन है, तो व्हाट विल बी द नेचुरल फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट टू कोल्ड. रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, वी वांट ठंडा टू बिकम मोर ठंडा, right? That is what we want inside the refrigerator. So we want heat to be transferred from hot to cold, sorry, from cold to hot. That is what we want to do inside a refrigerator, and in order to do so we use electrical work. Okay, so all the processes that you come across, right, in those processes the energy exchanges happen between system and surrounding, which can be classified into these two types, heat and work. ठीक है, वर्क में एज आई सेड वी आर फोकस्ड ऑन इन दिस चैप्टर ऑन मैकेनिकल वर्क और पीवी वर्क. पीवी मतलब प्रेशर वॉल्यूम वर्क. So here we will be seeing piston going up and down, expansion compression happening. That is what we will be focusing on. ठीक है, नाउ अब एक एक करके इन दोनों की डिटेल्स में जाते हैं. सबसे पहले जाएंगे वर्क की डिटेल्स में, एंड वर्क में भी एज आई सेड प्राइमरीली अभी हम जाएंगे मैकेनिकल वर्क की डिटेल्स में. ठीक है, सो कैलकुलेशन ऑफ, I would put it over here as mechanical or PV work. So किस तरीके से अब यहाँ पर आप नोटिस करना, एक एग्जाम्पल हम चूज करेंगे एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस मैकेनिकल वर्क हैपनिंग. सो लेट्स से you have this similar situation जैसा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. You have a gas trapped inside a vessel. ठीक है, you have a gas trapped inside a vessel and उसके ऊपर एक piston है. piston का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है. ठीक है, A stands for this cross sectional area and इस piston के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है of mass m. करेक्ट. तो if I ask you about initial pressure तो कितना होगा, it will be equal to the external pressure, and external pressure कितना है, right? This external pressure is downwards, which is atmospheric pressure plus because of this block mg by a, right? mg will be the force downward and a is the cross sectional area of the piston, and इसको balance करता हुआ gas का pressure है, right? So initially this is the situation and say v initial is the volume, correct? Now let's say I remove this block of mass m, तो क्या होगा, expansion हो जाएगा गैस का, correct? This expansion will be reversible type or irreversible type. Can you reason it out? It will be irreversible type because हम लोगों ने एक साथ पूरा मास m रिमूव कर दिया. This will be finite change happening, so we will call this as irreversible expansion happening. Correct. अब फाइनली क्या होगा, फाइनली अगेन इक्विलिब्रियम आ जाएगा, राइट? कुछ भी फाइनल वॉल्यूम आ जाएगी एंड फाइनल प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? तो इतना प्रोसेस आपको समझ में आया दैट दिस इज द प्रोसेस दैट विल बी हैपनिंग. नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस can you see that the gas did some work, it pushed the piston
up, right? It did mechanical work. Now, how do I calculate that work? तो हम शुरू हो जाते हैं. हम लोगों को थोड़ा सा अभी आपका वर्क पावर एनर्जी का नॉलेज लगेगा, राइट? सो आपने पिस्टन के ऊपर अपना फोकस बनाया, पिस्टन के ऊपर आपने नोटिस करा दैट गैस कितना फोर्स लगा रहा है, तो उसको हमने एफ गैस लिख दिया, राइट? एंड वर्क ऑफ गैस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? इट विल बी एफ डॉट डी एक्स, एंड उसका इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम whichever initial location to final location the piston is moving, right? Force can be written as P into A, right? And A into dx can be written as dV, right? A is the cross sectional area and dx is the change in the height, so that can be written as dV, right? So I did arrive at the work done by the gas, which is coming out to be integral P dV, P gas dV. However, notice karna, I am stuck over here. ठीक है, नहीं, दिस इज नॉट आई डी एक्स, ये मतलब मैंने यहाँ पे ये लाइक दिस इज पिस्टन मूविंग अ डिस्टेंस डी एक्स अपवर्ड्स, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर वर्क का कैलकुलेशन करा. इट इज एफ डॉट डी एक्स एंड उससे आई अराइव्ड एट दिस फॉर्मूला. बट आई एम स्टक हियर नाउ. व्हाई एम आई स्टक ओवर हियर नाउ? Because of the fact that during irreversible process we are not able to define pressure during the process. मुझे इनिशियल प्रेशर पता है, मुझे फाइनल प्रेशर पता है. इनिशियल प्रेशर कितना है गैस का? PATM प्लस mg बाई ए. मुझे फाइनल प्रेशर पता है गैस का, विच विल बी PATM. बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ये प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, आई एम नॉट एबल टू नो दैट. ठीक है, सो दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर मी. That then how do I determine the work done on the gas? So we have a simple workaround for this. Law of conservation of energy, right? Or as you would have studied, we will apply a simple work energy theorem on the piston. So अब हम piston के ऊपर focus करेंगे rather than on the gas. ठीक है, and on this piston there are two forces that are acting. One is the gas and the other is the external pressure. ठीक है, now external pressure जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, व्हाट विल बी द एक्सटर्नल प्रेशर? इट विल बी जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, अब यहां पर मैंने मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लिया है, लाइक अदरवाइज आई कुड हैव इंक्लूडेड पिस्टन का वेट आल्सो इन केस इफ गिवन इन क्वेश्चन. लाइक अभी यहां पर इफ यू वांट टू टेक यू टेक, इफ यू डोंट वांट टू टेक दैट्स ओके. सो इस पिस्टन के ऊपर एक तो गैस का फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, एक नीचे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Now if I apply on this piston like I'm not taking the weight of this piston for this purpose, yahan par I will simply apply the work energy theorem and say that delta ke will be equal to the net work done. Now initially भी piston rest पर था, finally भी piston rest पर ही रहेगा, right? दोनों states में equilibrium ही है. ठीक है, equilibrium at initial and final state. Right, so kinetic energy initially भी जीरो है, finally भी जीरो है, and work done is because of these two forces, because of gas and external force, right? So I can rewrite this as that the work done by the gas can be written as minus
external work done, right? And what will be this external work done? It will be again f dot dx, and ये force कौन सा होगा? External force. Now what is this external force? It will be external pressure into area of the piston, and this external pressure is something which was constant. In this case, in case of this irreversible process, this is something which can be measured, right? This is not something which is elusive to me. So I can have a measurement of this external pressure, and I can write down the work of gas as minus P external dV, do the integration and get the answer for applying the limits. ये a dot dx dv बन गया ना, this a dot dx ये dv बन गया. So this will be an important formula of understanding the work done. dx was a displacement, right, of the piston. ठीक है, तो piston like कितना move करा, like area of base into height, that will be your change in volume. No, ये dx will be the height change of the piston. A is the cross sectional area, तो ये जितना move करा, right, that will be giving me the change in volume. ठीक है. Now, as a quick summary, यहाँ पे notice करना आप what we have done and what we have come across. So we were discussing about calculation of work done, right? How this mechanical work, especially this PV work, is to be calculated. Now we realized that because of focusing on the gas, we encounter a problem that during irreversible processes, we might not be able to define the pressure of the gas. So what we did was we focused on the piston. We applied the work energy theorem on the piston and got an answer to work done by the gas in an indirect manner. And this comes as a conclusion that work done is equal to minus P external dV. Now notice karna, this is going to be our fundamental formula of work done. अब अगर मेरा process irreversible था, like the one that we did just now, तो उसमें, ठीक है, this is really important for you to take a note, because this is what we understood as a definition for irreversible processes. यहाँ पर आप notice करना, जो external pressure था वो कैसा था? Constant, right? Why? यहाँ पर एक underlying important concept छुपा हुआ है, because surrounding is vast. ठीक है, just give me a moment, let me plug in the charger. So as I was saying that in case of this irreversible processes, the external pressure is constant. Why? Because the surrounding is vast. So अभी जैसे अपन ने ये बात करा, ये जो अपना एग्जाम्पल था सैंड वाले एग्जाम्पल अगर आप लोगे, राइट, तो इसमें आप एक साथ पूरा का पूरा सैंड रिमूव कर दो, तो व्हाट इज द external pressure that will be acting? It will be the atmospheric pressure, correct? And this atmospheric pressure is because of the atmosphere around us, which is
a vast surrounding, and that atmospheric pressure isn't going to change. And that is where we keep P external as constant in our irreversible calculations. ठीक है. Whereas अगर मैं रिवर्सिबल के बारे में बात कर रहा था, तो रिवर्सिबल में क्या था, नोटिस करना, सिस्टम सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम. तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज नॉट कांस्टेंट. कैसा एक्सटर्नल प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर इज atmospheric pressure plus pressure because of the sand, and we keep on changing this sand का pressure, like grain by grain remove कर रहे हैं. पहले m dash था, फिर m double dash, फिर m triple dash, like we are constantly changing this external pressure such that system and surrounding are throughout an equilibrium. So here I can replace external pressure by pressure of the gas, say plus minus dp. एक्सपेंशन करना है कि कंप्रेशन करना है, उस पर डिपेंड करेगा. यू कैन डू प्लस माइनस dp. इफ इट वाज compression then I would do plus dp. if it is expansion then I will do minus dp. ठीक है. so p external is equal to p gas plus minus dp, and if I substitute that over here and then ignore this dp dv, so what I get, my answer of work done will be minus p gas dv only. This is, as I said again, in case of, please notice, reversible process. In case of irreversible process, this p external, which was constant, it came out of the integral, and we got the answer to the work done as minus p external into delta v, v final minus v initial. यहाँ पर we might have to do the integration. So this is the calculation related to work, especially mechanical work. ठीक है. इलेक्ट्रिकल वर्क वगैरह की भी कैलकुलेशन आपसे करवाऊंगा मैं, बट इन अनदर चैप्टर. अभी इतना पार्ट आपको समझ में आया मैकेनिकल वर्क का? that how do we compute mechanical work? इसमें किसी को कुछ डाउट है? ग्रेट. ठीक है. अब हम बात करते हैं हीट की. हाँ हाँ बोलो ना हर्ष. सर छोटा सा ये डाउट है सर, एक बार ऊपर कर सकते हो क्या? हाँ इधर इधर ही सर. वो कट को किया इट्स ओन वेट इधर एफ एक्सटर्नल पे. नहीं, आपको लेना है तो ले लो. मतलब इन जनरल जब भी, लाइक इन जनरल जब भी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे ना, यस तो सर. उसमें पिस्टन्स आर सपोज्ड टू बी massless. ओके सर. In general, in questions, pistons are massless and frictionless. मतलब that is a simplified understanding for us to be able to do calculations. ओके सर, गॉट इट. थैंक यू. हाँ बोलो वैष्णव, कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? देखो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको समझने के लिए यू नीड टू कीप इन माइंड दैट सैंड वाला विजुअलाइजेशन, तभी आपको ये समझ में आएगा. इरिवर्सिबल में मैंने क्या करा था, सैंड एक साथ हटा दिया था, तो पी एक्सटर्नल पी एटीएम हो गया था. करेक्ट. एंड रिवर्सिबल में मैं क्या कर रहा था, सैंड को ग्रेन बाय ग्रेन हटा रहा था. तो जो एक्सटर्नल प्रेशर था वो कांस्टेंट नहीं था, वो ऐसे ग्रेन बाय ग्रेन चेंज होता जा रहा था. इट वाज ऑलवेज लाइक
very close to P gas only, plus minus dP. Ha, so correct, Purna. In case compression is going to happen, then work will be done by the surrounding on the system. Expansion mein, the work is being done by the system on the surrounding. So I'll come to that sign convention in a while. Just आने वाला हूं मैं उस साइन कन्वेंशन के ऊपर. The general word use is work done. ठीक है, that is the general word. But in case of expansions, work is done by system on surrounding. In case of compression, work is done by surrounding on system. All right. हाँ, यहाँ पर एक्चुअली ओके, लेट मी रिमूव द डाउट फॉर यू. अभी के लिए ठीक है, मैं इसको माइनस डीपी रखता हूँ क्योंकि हम लोग एक्सपेंशन ही कर रहे थे. ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल ही एक्सपेंशन का ही था, तो लेट मी कीप इट एज जस्ट माइनस डीपी फॉर नाउ. ठीक है, कंप्रेशन मैं बाद में आपके सामने लेके आ जाऊंगा, नॉट अ वरी. ठीक है, ऑल राइट. हैविंग सेड दिस, लेट्स नाउ मूव टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीट. ठीक है, तो वर्क हमें समझ में आया, स्पेशली मैकेनिकल वर्क कैसे लिखा जाता है, कैसे समझा जाता है. अब हीट एक्सचेंज के बारे में समझना. जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था दैट हीट एक्सचेंज्ड is due to temperature gradient, right? The difference between the temperature of system and surrounding. So we write, in fact, latent heat वाला part मैं थोड़ा बाद में ही cover करूँगा. Let me not confuse you right now with that. Heat exchange right now is something which we are taking because of temperature gradient between system and surrounding. So heat exchanged is directly proportional to the difference in temperature, right? And we can compute that heat exchange. We can compute this proportionality, we can convert it into a mathematical equality using heat capacity. Okay, so this will be the fundamental definition of, or calculation of, I should say, heat exchange, that dq is equal to integral c dt. Okay, in, you can say 90% of the questions in the booklet, the heat capacity will be constant. For example, you know water ka heat capacity is 1 calorie per gram degree centigrade. You have even studied that value. Oil का heat capacity थोड़ा कम होता है, या कोई और substance होगा तो उसका heat capacity कुछ और होगा, right? So in most of the questions, that heat capacity is constant, and that is where we can take it out of the integral and we can write Q is equal to C delta T. ठीक है, अच्छा, an important point to notice here, never write integral dq as delta q. ये गलत नोटेशन हो जाता है, never ever do that. ठीक है, integral of dq is written as q only. This c is the total heat capacity, which can be further written depending upon how the data is given. यहाँ पे notice करना, this total heat capacity can be written as moles into molar heat capacity, or it can be written as mass into specific heat capacity. Typically,
गैसेस के लिए द वर्ड मोलर हीट कैपेसिटी इज यूज्ड ऑफन, एंड अगर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैं तो उनके लिए टिपिकली द वर्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज यूज्ड. So you can have heat capacity, total heat capacity written as moles into molar heat capacity or mass into specific heat capacity. Right? You can notice the units also. Molar heat capacity is joule per mole Kelvin, or specific heat capacity will be joule per kg Kelvin. डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज करते हैं यहाँ पर. So this will be the simple understanding of heat exchange. ठीक है. However, we'll not leave it over here. हम इसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग करेंगे before we finish off calculation of heat. Now notice करना यहां पर हीट कैपेसिटी, ठीक है, बीट हीट कैपेसिटी में थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा. हीट कैपेसिटी, बीट द टोटल हीट कैपेसिटी और द मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट, it depends upon the substance as well as its physical state. For example, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या वाटर का टोटल हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी विल बी डिफरेंट फ्रॉम ऑयल का हीट कैपेसिटी, फ्रॉम बेंजीन का हीट कैपेसिटी. सब्सटेंस टू सब्सटेंस ये हीट कैपेसिटी वेरी करता है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस हीट कैपेसिटी? मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखा है हीट कैपेसिटी का, बट आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच यू वुड हैव लर्नड इन योर जूनियर क्लासेस ओनली, दैट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of the substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin. That is what the definition of heat capacity is. Amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree centigrade or 1 Kelvin. So heat capacity, as I said, it depends on the substance as well as physical state. So for example, water, ice, steam, इन तीनों का heat capacity अलग अलग होता है. It is the same chemical nature of the substance, H2O ही है, but अगर एक आइस के फॉर्म में है, एक लिक्विड वाटर के फॉर्म में और एक स्टीम के फॉर्म में है, तो भी उनका हीट कैपेसिटी अलग अलग रहता है. So heat capacity depends on substance as well as its physical state. Also notice करना, heat capacity is a path function and its value depends on the path or the process also. It not only depends upon the substance and its physical state, but also depends on the process. किस तरीके से? ठीक है, आप यहां पर, मैं लेट मी टेक अ साइड एग्जांपल फॉर यू, एंड आप इसको इंट्यूटिवली फिगर आउट करने की कोशिश करना. ठीक है, इंट्यूटिवली फिगर आउट करने की कोशिश करना. सो आई हैव टू केसेस टू कंपेयर. किस तरीके से आप यहां पे नोटिस करना. वन से इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम सिचुएशन, एक रिजिड वेसल है जिसके अंदर गैस प्रेजेंट है, एंड एक दूसरा सिचुएशन है which is a constant pressure situation. So this will be isochoric process and this will be isobaric process. ठीक है. अच्छा, अब
नोटिस करना दोनों में सेम गैस ही प्रेजेंट है एंड सेम इनिशियल स्टेट मान लो, सेम इनिशियल स्टेट, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब सेम है, ठीक है। दोनों में सेम हीट प्रोवाइड करी गई, सेम हीट इज प्रोवाइडेड। Now, do you expect the same change in temperature in both the cases? Do you expect the same temperature change in both the processes? So I have got a no from Sairam and Tarun and Shivang and Harsh. The same walls hai, Ayush, same walls hai. There is no difference in the walls. It's just that one is operated isochorically, the other is operated isobarically. All right, so I would like to hear arguments from your sides. So Sairam has said that temperature change would be different. Can you elaborate, Sairam? Why would you say that? Can I unmute you? हाँ, बोलो. Sir, because in the isochoric part, we have got a rigid vessel. So there, even if the gas will try to expand itself because of the barriers which it has, it will not be able to expand itself that much as in the isobaric, as it will be able to push the piston up. So there the volume will also expand. So I think that in the isobaric part, the temperature will rise more than the isochoric part. अरे तुम पहले सही बोल रहे थे, एंड में तुमने थोड़ा सा गलत बोल दिया. सो सेम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों सिचुएशंस में, ठीक है. सेम हीट इज बीइंग प्रोवाइडेड. नाउ यहां पर इन द आइसोकोरिक पार्ट, that entire heat is being used to increase the temperature. Yes, sir. Whereas in the isobaric part, the same heat that we have provided is being used in two parts. Some goes in increasing temperature and some goes in doing work. Why? Because this piston is pushing against the surroundings, no? Yes, sir. So out of the total heat that is provided, which is same in both the scenarios, in the isobaric case, some of it is being used in increasing temperature and some of it is being used in doing work. Wow. तो यहां पर टेम्परेचर चेंज इनफैक्ट अलग रहेगा और कम रहेगा. Whereas यहां पर all the heat that is being supplied is just going in increasing temperature only. ठीक है. Yes, sir. तो अब because Q was equal to C delta T, तो can you notice अगर दोनों का Q सेम है और डेल्टा T अलग है तो हीट कैपेसिटी भी अलग अलग होना पड़ेगा ना. अगर Q सेम है और डेल्टा T अलग है तो C भी अलग अलग होना पड़ेगा फॉर द सेम गैस that was present. So what we realize from this, what we understand from this is that heat capacity is a path function and it depends upon the path or the process. That is the key learning that I wanted to give you from this example. Now,
हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था दैट देयर आर मेनी पॉसिबल पाथ्स, बट एटलीस्ट जो हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट करे हैं, राइट, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल, उनमें हीट कैपेसिटीज कैसे रहते हैं वो हम एक बार समझ लेते हैं। तो अगर नोटिस करना कोई आइसोबेरिक प्रोसेस होगा तो उसमें हीट कैपेसिटी की वैल्यू अलग रहेगी, उसको हम लोग Cp से डिनोट करेंगे, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा तो उसको Sp से डिनोट करेंगे। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो उसी सब्सटेंस की, सेम ही सब्सटेंस के बारे में अगर बात कर रहा हूँ, लेट्स से कोई आइडियल गैस है से N2, वो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस के थ्रू जा रही है तो उसकी हीट कैपेसिटी विल बी रिपोर्टेड एज Cv या Sv। अगर that same gas is undergoing say an adiabatic process, then the heat capacity is defined 0. Why? Because adiabatic process की definition ही यही है कि there is no heat exchange that will happen, right? तो ये जो मेरा Q is equal to C delta T है, right, इसमें लेफ्ट हैंड साइड 0 है और टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज इज नॉट इक्वल टू 0 इन एडियाबैटिक। तो heat, what would make sense for the heat capacity to be then? The heat capacity has to be 0, ठीक है। And then lastly I'll talk about isothermal processes. Isothermal processes में नोटिस करना, यहां पर the heat is non-zero whereas change in temperature is 0. Isothermal मतलब delta T is 0, there is no change in temperature, but heat exchange तो होगा, राइट, कंडक्टिंग वॉल्स रहती है आइसोथर्मल में, जैसा मैंने आपको बताया था, राइट, देयर आर कंडक्टिंग वॉल्स जिनके अक्रॉस हीट एक्सचेंज होता है इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेसेस। तो व्हाट डू वी मेक आउट ऑफ हीट कैपेसिटी नाउ? दिस साइड इज नॉन जीरो एंड डेल्टा टी इज 0, तो दैट विल बी ओनली व्हेन हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट, or we say that the heat capacity is not defined, right, because non-zero upon 0 is something which we say is not defined. So this is important for you to remember regarding heat capacity. और अगर कोई random process हुआ apart from these, like हम लोगों ने तो यही पढ़े हैं to begin with, ठीक है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, ये हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, बट अगर कुछ रैंडम सा प्रोसेस भी रहता है विच विल कम अक्रॉस, तो उस केस में कैसे उसका कैलकुलेशन करेंगे, कैसे हीट कैपेसिटी डिफाइन हो पाएगी, कैलकुलेट हो पाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा इन मिसलेनियस एग्जांपल्स। हाँ, CPCV आर जस्ट notations, like the values are of course dependent on substance and we need to refer to them, refer to the tables that are present in the literature कि वाटर का हीट कैपेसिटी, ऑयल का, बेंजीन का, O2 गैस का, N2 गैस का, वो सब टैबुलेटेड वैल्यूज रहती हैं which we need to refer to while doing questions, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? अरे क्या हो गया, ठीक है, ऑलराइट, हाँ हाँ मैं ब्रेक दूंगा, ठीक है। तो ये हीट कैपेसिटी का पार्ट इतना समझ में आया आप लोगों को? हीट एंड वर्क का कैलकुलेशन,
ग्रेट, ठीक है। इसके आगे का अब हम देखते हैं, बट आई थिंक एक छोटा सा ब्रेक लेना अप्रोप्रिएट रहेगा। हाँ यश, करेक्ट। ठीक है, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। साइन कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क। सो अभी कितना हो गया, 12:30। तो लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रीदर। We will resume at 12:40. ठीक है, ऑलराइट। हाँ, ये थोड़ा सा साइन कन्वेंशन बस मैं आपको पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद अपन लोग बॉन्डिंग एंड ऑल के डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, you don't need to leave the meeting and all, you can stay in the meeting. We'll resume at 12:40, but 12:40 sharp आ जाना।
All right, I hope everyone is back. हाँ, यश का ओके, यश का क्वेश्चन है, isothermal process में there is heat, then why is there no change in temperature? All right, so can anyone answer that question? Isothermal process में if there is heat, why there is no change in temperature? It's a good question, fundamental question. Ha, right. So we have two candidates. Aditya. Ha. All right, I think Aditya is not there. Bolo Harsh. So I think because वो exchange होता है energy without any change in temperature, because the boundary है वो बहुत thin है, इसलिए नहीं मतलब टेम्परेचर को सेम लाने के लिए ही तो हीट एक्सचेंज हो रहा है हर्ष। मतलब यहाँ पर लेट्स से आप इमेजिन करो, you had a gas, right, and these are conducting walls. ठीक है, all you need are conducting walls, not necessarily thin, but they should be conducting. Now let's say if you did work on this, right, आपने push करा piston downwards, so you did work on this. Now you supplied this energy. If the walls are conducting, then the energy transfer can happen from gas to the surroundings, and temperature of gas can equalize with the temperature of surroundings and stay constant. ठीक है, आपने यहाँ पर समझने की कोशिश करना, आपने वर्क किया, गैस का टेम्परेचर हो सकता है बढ़ेगा, राइट, बट बिकॉज द वॉल्स आर कंडक्टिंग, हीट लिबरेट हो जाएगी एंड द टेम्परेचर विल अगेन कम बैक टू द ओरिजिनल टेम्परेचर विच इज द सराउंडिंग्स का टेम्परेचर. यस सर. और यहीं पर अगर लेट्स से द वॉल्स वर इंसुलेटिंग, that means no heat can transfer, and if you then compress the gas, it will result in an increase in temperature only, like what we saw yesterday in form of that fire syringe. So now it will be adiabatic if the walls are insulating. If the walls are insulating, correct. ठीक है, all right, so does that answer your question, Yash? समझ में आया तुम्हें? All right, now based on our understanding of heat and work which we had described above, अब हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, which is really very very important and an avenue of careless mistakes which you guys will learn the hard way. So ऐसा नहीं है that you are not going to make mistakes, but if you are making those mistakes but then you keep a log of them, you have them as a constant reminder that you will not make these mistakes in future. So साइन कन्वेंशन का काफी ध्यान देना पड़ता है. नोटिस करना,
नहीं यश, सराउंडिंग इज वास्ट, सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है. इनफैक्ट I think I will be able to better relate to your doubt maybe in next class. Okay, when I will be actually taking you through isothermal processes. Okay, थोड़ा सा रुक जाओ, keep that doubt handy. It will get sorted in the next class itself. Right. So as I was talking about the sign convention for heat and work, तो notice करना, अगर system में heat supply करी जा रही है, if heat is being absorbed by the system, then the sign associated with that will be positive. And if the heat is being released, then the sign associated with that will be negative. Heat supplied is positive, heat released is negative. Then work का sign convention notice करना, ठीक है. केमिस्ट्री में और फिजिक्स में हीट का तो सेम साइन कन्वेंशन रहता है, ठीक है. फिजिक्स में भी आप नोटिस करोगे तो उसमें भी आपको यही मिलेगा जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ोगे, दैट हीट सप्लाइड इज पॉजिटिव एंड हीट रिलीज्ड इज नेगेटिव, ठीक है. बट इफ यू विल टॉक अबाउट द साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क, it is different in chemistry and different in physics. Uska reason is something to do more with the like ego of scientific community. Like सब अपने अपने norms पे चलना चाहते हैं. Nobody wants to bend. So that way it is a different sign convention that is being used in chemistry के questions and different sign convention being used in physics के questions. And please keep in mind, जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है थर्मोडायनेमिक्स का, तो डू रिमेंबर कि वो फिजिक्स के सेक्शन में पूछा जा रहा है कि केमिस्ट्री के सेक्शन में पूछा जा रहा है, बिकॉज आपको अकॉर्डिंगली साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा. Now in case of chemistry, when we talk about work done on the system by the surrounding, right? Compression हो रहा है, ठीक है. If compression is happening, then work is being done by the system on the surrounding. We say that the work is positive. And similarly, यहाँ पे आप notice करना, if you have work done by system on surrounding, let's say expansion हो रहा है, expansion हो रहा है तो piston is being pushed by the gas, right? So the work is being done by the system on the surrounding, that is given a negative sign. So this will be an important sign convention for you to remember while solving many questions. ठीक है. इसका especially when you will be kind of doing mathematical calculations, तो उस टाइम पर इक्वेशंस में जब वैल्यूज डालनी होगी तब साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा यूज रहता है. We are going to come across those examples sooner and you will understand how to use them in calculations or in questions. Now, apart from this, notice karna, there is one more term which I would like you to get acquainted to, which is called as total internal energy. Now, what is this total internal energy term? It is represented by this symbol capital E or capital U. It is the sum of all form of energy possessed by the system by the virtue of its existence. So let's say you have a sample. You have a sample of, say, a gas or a solid or a liquid or a mixture of substances or some compound. It doesn't matter. That system possesses certain amount of energy in it, and we call it
total internal energy. Notice करना, this total internal energy is not because of any external forces. Like for example, gravitational potential energy is not going to be counted as internal energy. Okay, because this gravitational potential energy will be because of an external force. Any electrostatic potential energy will not be counted as internal energy. Okay? The energy terms which are because of external forces, they are not counted in the internal energy. So for example, let's say you have, say, N2 gas present inside a vessel, right? So isme there is kinetic energy that is present because of the molecules moving randomly, right? They have this kinetic energy associated with them. There is potential energy also present in these molecules, right? What kind of potential energies? Say some bond energy, some atomic energy, like electron और nucleus के बीच में जो attractive force है, something which is internal or inherent to the system, right? There can be nuclear energy, nucleus के साथ में जो associated energy है, right? Or any other form of energy which this system has inherent in it. Okay, not dependent on any external force or anything. Okay, so this is what we call as total internal energy. Okay, it is the sum of the kinetic energy and the potential energy inherent to the system. Now, notice karna, one important aspect is that this internal energy is a state function. However, its absolute value cannot be determined. So you have, say, a sample of gas, and I ask you that what is the internal energy associated with that sample? The answer is that we are not able to determine that. The absolute value is not something that we can work towards. One of the simple reasons for that is that these potential energy terms, they are all based on defining certain reference. Right? Kinetic energy तो फिर भी absolute terms में बात करी जाती है, because we associate kinetic energy with temperature and temperature on absolute scale. But these potential energy terms, they are all defined based on references. So we really aren't able to comment upon an absolute value of this internal energy. However, that does not stop us from studying the change in internal energy. Rather, that will be our focus in this chapter. That by doing certain process over this gas, right, by heating it or by cooling it or by expanding it or contracting it, we may bring in changes in its internal energy, and those changes are what are going to be crucial for us. ठीक है, so यहाँ पर we did introduce a new thermodynamic property in front of you called as internal energy. This internal energy is something जिसका definition आपको मैंने अभी बताया समझाया. इसका calculation मैंने आपको दिखाया, and we did conclude that इसका absolute value हम लोग नहीं निकाल सकते हैं. Although that doesn't stop us, because we are more interested in understanding the change in this internal energy. How would we work towards that change in internal energy?
That is what we are going to now focus on. ठीक है, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से रिज्यूम करते हैं, बिकॉज अब मुझे बॉन्डिंग के डाउट्स को डिस्कस करना है आप लोगों के साथ में. सो लेट्स टेक अ पॉज टिल हियर. So we are on the internal energy bit, and we need to then start working towards the change in internal energy. So how will we work on that? We'll pick up from here itself. नहीं थोड़ा टाइम लग जाएगा केतन उसमें. Like we might have to in fact spend more than half an hour on this. So ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर देंगे. It's no big deal. अभी मैं थोड़े बहुत बॉन्डिंग के डाउट्स आप लोगों के डिस्कस कर लेता हूँ. दैट इज ऑल्सो क्रूशियल, अदरवाइज बीच में काफी गैप आ जाएगा. ठीक है, सो लेट मी नो योर डाउट्स फॉर नाउ. सबसे पहले we will start with FBO और FBS. इन सब के तो काफी सारे डाउट्स आपके हो ही चुके हैं. So maybe we should start with get equipped to advanced. ठीक है, गेट इक्विप्ड टू एडवांस में बता दो कहाँ पे डाउट्स आप लोगों के. हाँ, आप क्या पूछ रहे हो सानिका? VACPR में FBO का 18th. ओके, गिव मी अ मोमेंट. VACPR में fluorine molecules are formed by. So इसमें कैसा है ना सानिका, when we talk about F2 as an example, right? The thing is that between fluorine and fluorine, all we have as an experimental evidence is that two atoms are connected to each other by a single bond. Now, this can be explained by, or this can be explained without hybridization, as well as with hybridization. दोनों से ही इसके एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, लाइक इसमें इट कुड बी दैट p एंड p ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है, और यू कुड हैव सेड कि अरे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो रहा है. द आंसर वुड हैव बीन द सेम. Now in the question that was given in the booklet, they didn't give you the answer, or they didn't tell you कि sp3 का ओवरलैप है, but they did put an option कि p and p का ओवरलैप. So out of the possible options that were there, this came out to be the appropriate answer. Had they mentioned sp3 hybrid orbital का overlap, then I would have marked that, because hybridization is a better concept or a better theory which should be applied with BBT when understanding structure of atoms, structure of molecules actually, especially जहां पर दो या दो से ज्यादा atoms हैं, तीन या तीन से ज्यादा atoms हैं. So in the same question only, if it was multi-correct, then we will be marking both the option ना? नहीं, तब भी मैं sp3 ही डाल दूंगा. एंड वैसा क्वेश्चन पूछना भी नहीं चाहिए, मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए तो इट इज काइंड ऑफ सिंगल चॉइस होना ही चाहिए. मल्टीपल चॉइस में कंफ्यूजन थोड़ा क्रिएट करना है.
Okay, sir. All right, so get equipped get equipped to advanced I am getting these doubts. 12, 24, 26, 27. Then passage 2 ka question number 6, matrix match 8. All right, what else? और बताओ इसके अलावा any other doubts? 18 भी है. ओके 18 में डाल देते हैं. ठीक है, मैं इतना शुरू करता हूँ, फिर आप लोग मुझे बताते जाना. All right, so get equipped to advanced का question number 12. KF combines with HF to form KHF2. Now KHF2 में K plus तो रहेगा ही सही, right? And K plus के साथ में this will be the bifluoride ion that will be present. इसका हमने discussion किया था when we were studying hydrogen bonding, that in this you have hydrogen bonding. Like this was a normal covalent bond, and this was a hydrogen bond. Now, why did we study specifically this bifluoride ion? What was so special about it? Do you remember? There was something special about it. हाँ, इसमें the hydrogen bond had exceptionally high bond energy. Exceptionally high bond energy of the hydrogen bond. And this H was like equidistant from both these fluorines. Like generally hydrogen bond weaker होता है and longer होता है, but इस case में ये दोनों bonds की length identical थी, the covalent and the hydrogen bond. So this was an example to remember. ठीक है. Then question number 18 में, 18 में आप वो ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर कर लो, बिकॉज PtCl4 2- वाला option is not something which you would be able to relate to. This is something which is to be studied in coordination compounds chapter. To be studied in coordination compounds. ठीक है, बाकी आपने इनके बारे में तो पढ़ा ही है. अमोनिया will be sp3, PCl5 will be sp3d and VCl3 will be sp2. तो उसके हिसाब से आप आंसर कर दो. करेक्ट. ऑल राइट. हाँ, 6th क्वेश्चन भी है. 6th क्वेश्चन क्या है? Sigma 2s has a higher energy than sigma star 1s. Orbital is bonding while sigma star 1s is anti-bonding. The sigma 2s orbital has higher energy than sigma star 1s orbital. Sigma 2s is bonding while sigma star 1s is anti-bonding.
Because sigma 2s is planar while sigma star 1s is non-planar. Symmetrical, unsymmetrical. Sigma 2s is nearer to the nuclei than sigma star. इसमें तीनों ही गड़बड़ है. मतलब none of these make any sense. Like sigma 2s is formed by linear combination of 2s and 2s atomic orbital, right? Whereas sigma star 1s is formed by linear combination of 1s and 1s atomic orbitals. And like इसमें like sigma one s, or in fact sigma star 1s is of a lower energy and sigma 2s is of a higher energy. Like it is something जो हमने ये पढ़ा है कि ये एक 1s ऑर्बिटल है, ये एक 1s ऑर्बिटल है, right? इनके कॉम्बिनेशन से you will have a bonding and an anti-bonding electron. Right? And right, ये 2s और 2s का कॉम्बिनेशन है. In fact, what I can rather say इसके पीछे का रीजन, ठीक है, इसके पीछे का रीजन, a more appropriate reason would be significant energy gap between first and second shell. मतलब if you remember that Bohr's model also, ठीक है, if I was to take a Bohr's model of hydrogen atom, तो उसमें आपने याद है कैसे देखा था, ये -13.6 eV, फिर ये -3.4 eV and then -1.51 eV. Like so anyways between the first and the second shell there is a large energy gap, and because of that energy gap like 1s और 2s का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है. 1s का दूसरे एटम के 1s के साथ में हो रहा है एंड 2s का दूसरे एटम के 2s के साथ में लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है. एंड एज अ रिजल्ट दिस इज व्हाट वी आर सीइंग, that there is a significant difference in the energies of their molecular orbitals also. Okay, so that will be the appropriate reason none of these ABC options. Okay. All right. Then 24th question. Which of the following does not contain peroxide ions? तो ions के लिए या फिर rather than saying peroxide ions, इसमें नहीं होंगे because this will be Pb4 plus and there will be 2 oxide ions. ठीक है, this is normal oxide. ठीक है. As a matter of fact, I would also select second option also. ठीक है, इसमें भी आयन तो नहीं होगा. Ions of O2 2- are not present. मतलब इसमें peroxide bond जरूर है, peroxide bond
or peroxide linkage is there, but not O2 2 minus ions. They are present in SrO2 2 minus, like यहाँ पर Sr2 plus and O2 2 minus ion रहेगा. यहाँ पर भी barium 2 plus and O2 2 minus ion. These will be your peroxide ions. These will be ionic compounds. But H2O2 तो covalent है, उसमें थोड़ा ना peroxide ion रहेगा. हाँ, ये आपका thought process सही है यश, that PbO2 readily reduces to PbO. ठीक है, but isn't present in form of Pb2 plus and O2 2 minus ion. इस फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है. It goes from PbO to PbO2 to PbO. +4 से +2 चला जाता है, but not in this way. मतलब जैसे इसके ये चीज हमें कैसे पता पड़ेगी यश? This is going to come from the experimental observations. What kind of experimental observations? That this PbO2, this acts as a strong oxidizing agent. ठीक है, अदरवाइज जो peroxides होते हैं, ठीक है, peroxides इनका कैरेक्टर होता है that they can act as oxidizing agent as well as reducing agents. इनमें ये दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं इनके रिएक्शंस में. ठीक है, but PbO2 behaves as a strong oxidizing agent only. All right, then 26th, ये तो हमने क्लास में डिस्कस किया था. As part of this question, like 26th में हमने ये चीज देखी थी that नहीं यश, उसमें ऐसा एक rigid rule नहीं रहता है. Some things you learn on the go regarding the calculation of oxidation state. Right, ये हम लोगों ने comparisons किए थे. एक बार क्लास नोट्स में देखो अगर याद नहीं आ रहा तो. We had discarded these structures. H के अराउंड 180 डिग्री का एंगल हमने प्रपोज किया था. तो क्यों किया था वो आप एक बार नोटिस करो वापस से. 27 is something that we did before also ना. ये पहले किया था वो याद नहीं है? इसमें अपन ने ये डिस्कस किया था ना that अगर मैं डायपोल मोमेंट्स देख रहा हूं तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए. ठीक है, एंड दिस वन राइट आर एट अ 120 डिग्री एंगल. तो जो नेट डायपोल मोमेंट है वो μ1 के बराबर ही आ गया. मान लो ये μ1 था. ठीक है, एंड इन दिस केस राइट, इस केस में भी दिस वन एंड दिस वन कैंसिल आउट ईच अदर. ये μ1 और ये μ1 तो कैंसिल आउट कर रहा है एक दूसरे को.
right? Whereas this and this, they are going to give us a net dipole moment at a 60-degree angle. ये mu1, ये भी mu1 at 60 degree. तो यहाँ पर mu net कितना हो जाएगा? √3 mu1. वो आप cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो. तो आपका ये आंसर आएगा 1.5 times √3, and that is what is going to give you the correct answer. Then passage 2 का question number 6. इसमें कौन से ऑप्शन में अटक गए बताओ? किसने पूछा था ये? पैसेज 2 तुमने पूछा था यश. बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 प्लस इज ग्रेटर देन N2 माइनस. तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5 है कि नहीं? सेम बॉन्ड ऑर्डर, but N2 minus has more anti-bonding electrons, right? So that makes this lesser stable as compared to N2 plus. समझ में आया? नहीं, हाँ, more anti-bonding electrons means lesser bond energy. Like you can say, so bond energy would be the energy released when the bond got formed, right? Or you would say that it is the energy required to separate the two atoms. So N2 as a whole molecule is at a higher energy as compared to N2 plus, right? मतलब आप अगर इसको इस तरीके से सोचोगे कि ये एनर्जी का स्केल है, ठीक है? And my end result is that I have to take the atoms apart from each other, come down to zero energy. ठीक है? And like हम लोग ये सब नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जीज होती है ना, पोटेंशियल एनर्जीज होती है, इनको हम नेगेटिव के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करते हैं. सो यहाँ पर ऊपर N2 माइनस रहेगा और ये N2 प्लस रहेगा, राइट? तो अभी समझ में आया कि किसको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू ब्रेक इट अप? ठीक है. हाँ, XeF2 has 2 F atoms in axial position while XeF4 has 4 atoms in equatorial. ये गड़बड़ हो गया ना? XeF4 has no axial or equatorial positions. But actually अगर इसमें मतलब what it is trying to say is actually हाँ, right, I understand. What it is trying to say is that both the lone pairs are opposite to each other. Okay, what it is trying to say by this is that both lone pair are opposite to each other.
which is actually correct. So इसमें I think that will be the reason why this fifth statement is correct. Although you are right, language के terms में थोड़ा सा confusing हो गया है. ठीक है, then matrix match में 8th वाला, हाँ ये एक अच्छा question है. इसमें see what you will have to do is, यहाँ पे आप notice करना, मैट्रिक्स मैच के इस वाले क्वेश्चन में सी ए टी एंड एस तो फिगर आउट हो जाता है. पी एस एंड टी कैन बी फिगर्ड आउट. इसमें तो डाउट नहीं होगा ना? इसमें डाउट है क्या पी एस एंड टी ऑप्शन को फिगर आउट करने में? करेक्ट. तो यहां पर आएगा क्यू एंड आर अंडरगोज ऑक्सीडेशन या रिडक्शन. हम कैसे समझेंगे? व्हाट विल बी द टेंडेंसी? तो यहां पे नोटिस करना, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन implies removal of electron. ठीक है, तो अब यहां पर if removal of electron increases bond order, then there will be or there shall be a tendency to undergo oxidation. समझ में आया? अगर B2 से B2 प्लस बना रहा हूं मैं और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी रहेगी. एंड अगर मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूं, व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. है कि नहीं? right? So if addition of electron increases bond order, right, stability बढ़ा देगा, then there shall be a tendency to undergo reduction. समझ में आया कैसे आंसर करना है इसको? अब आप यहाँ पे चेक करो, हर एक केस में लाइक B2 में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके देखो और एक इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करके देखो, किस केस में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा. N2 के केस में दोनों से बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, तो इट विल नाइदर हैव अ टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बिकॉज रिमूवल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस इट्स बॉन्ड ऑर्डर. समझ में आया? ठीक है, और बताओ और क्या डाउट्स हैं इन द गेट इक्विप्ड टू एडवांस वाला पार्ट? ओके, हाँ हाँ, मतलब अभी अपन ने एमओटी में चीजों को बॉन्ड ऑर्डर से रिलेट करना ही सीखा है प्राइमरीली. ठीक है, अच्छा मैं नेक्स्ट क्लास का टारगेट बता देता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अगेन आई विल कीप अ स्मॉल हाफ एन आवर डाउट डिस्कशन सेशन
and that will be focused on Windows to Advanced. Okay, that too also has good set of questions. And Windows to Advanced में ध्यान से notice करना, there is a small screw up in the answer key. मतलब I will actually I don't remember exactly वो screw up exactly कैसा था, but आप लोग अब ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है, विंडोज टू एडवांस वाले. एंड इस वाले पार्ट में ना आई थिंक शायद मे बी इवन थोड़ा यहाँ पर कहीं पर से कुछ ऐसा हुआ है दैट एक नंबरिंग गड़बड़ हो गई है. ठीक है, इनफैक्ट चलो लेट मी ट्राई एंड फिगर इट आउट फॉर यू. गिव मी कपल ऑफ मिनट्स, हम लोग एक दो क्वेश्चन ट्राई करके समझ लेते हैं. ये आखिरी के क्वेश्चंस में ही कुछ स्क्रू अप हुआ है इसमें. All right, so for example 21st क्वेश्चन जैसे मैं आपके सामने लेके आता हूँ, आप लोग ही मुझे बताना. ओके, तो ये 21st क्वेश्चन में, ठीक है, क्या आंसर रहेगा आप लोगों के हिसाब से, बताओ जरा. नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज CO3 2 माइनस में तो रेजोनेंस होगा, तो इसमें सारे के सारे CO बॉन्ड्स आइडेंटिकल होंगे, जबकि H2CO3 में you will have double bond, single bond between carbon and oxygen, right? So all CO bonds in carbonate are equal but not in H2CO3, so this is correct. Then ये HCO2 minus के बारे में बात कर रहे हैं. So HCO2 minus will be something like HC double bond O और O, और इनके बीच में भी रेजोनेंस होगा यहाँ पर, ठीक है. तो ये दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल रहेंगे, ठीक है. एंड इन दिस केस एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड रहेगा. सो ऑल CO बॉन्ड्स इन HCO2 माइनस आर इक्वल बट नॉट इन दिस. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, ठीक है. यहां पर आप नोटिस करना जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 4/3 आएगा. यहां पर बॉन्ड ऑर्डर आप जब कैलकुलेट करोगे तो वो 3/2 आएगा. तो CO bond length in HCO2 minus is longer than the CO bond length in carbonate. ये गड़बड़ हो गया ना. CO bond length in this are shorter because ये bond order ज़्यादा है. This is 1.5, this is 1.33. तो CO bond length in HCO2 minus ये जो formate ion नहीं, formate नहीं, formic acid, हाँ formate ion ही बोलूँगा मैं इसको actually. Formate ion के अंदर बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1.5 whereas this carbonate ion के अंदर it will be 4/3. तो CO bond length in the formate ion is shorter, तो ये गलत हो गया. And CO bond length in formate and CO bond length in carbonate are equal, ये भी गड़बड़ हो गया. तो 21 का करेक्ट आंसर C and D है, ठीक है. हाँ, तो अब गड़बड़ इस तरीके से है, ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान से नोटिस करना, 21 का करेक्ट आंसर क्या निकाला हमने, C and D. तो इसमें एक्चुअली ऐसा है कि ये 21 है, ठीक है, ये 22 रहेगा, ये आई थिंक 23 रहेगा, 24
एंड 27 तक क्वेश्चन है, कुछ तो ऐसा था, मतलब आई डोंट रिमेम्बर फॉर श्योर। 27 का आंसर आप लोगों को मैं फिगर आउट करके बता दूंगा, आप लोग ट्राई करना खुद से। कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्क्रू अप हुआ है, ठीक है, मतलब एक नंबरिंग इधर उधर गड़बड़ हो गई है। आई थिंक 21 की भी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर। ये 20 है ना, 20 में इनकरेक्ट पूछा है। ए सी, हाँ 20 से आई थिंक सही है। ये भी आई थिंक ये 20th है, 19th ए सी, समझ नहीं आया, थोड़ा देखना है यहाँ पर। देयर इज सम स्क्रू अप ऑफ दिस ऑप्शंस। आप लोग ये करके आओ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मोस्टली तो ये सारे क्वेश्चंस में आप में से सबको मतलब कुछ ना कुछ डाउट्स रहने वाले हैं, बिकॉज दीज आर ऑल गुड क्वेश्चंस। ये वाला जो बंच ऑफ क्वेश्चन है, दीज आर ऑल गुड क्वेश्चंस, सो इफ यू वुड वांट टू अटेम्प्ट, ठीक है, यहाँ तक कर लेना। हाँ, इसमें भी ये दो ऑप्शंस ये है ही नहीं, मतलब 37 38 क्वेश्चंस ही नहीं है, सिर्फ 36 तक है, करेक्ट यश, ठीक है। तो ये आप नेक्स्ट क्लास में करके लेके आओ, एंड वी विल डिस्कस द गेट इक्विप टू एडवांस वाला पार्ट और विंडोज टू एडवांस्ड, ठीक है। ऑल राइट, चलो टेक केयर गाइस। एनी अदर क्वेश्चंस यू वुड वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड? आयोनिक बॉन्ड है उसमें, Al3+ आयन है और दो ऑक्साइड आयन्स है, दैट्स इट। दो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं और एक Al3+ आयन है, ठीक है। चलो ऑल राइट देन, टेक केयर गाइस।